हेलो स्टूडेंट्स, चलो एक ऐसी दुनिया के बारे में सोचते हैं जहां आपको सब कुछ चाहिए, फैंसी कार्स, लेटेस्ट गैजेट्स and maybe even a unicorn. But reality hits. We are living in a world of trade-offs and production possibility curve is our guide through this maze of choices. तो आज की इस वीडियो में हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के कॉन्सेप्ट को अनकवर करेंगे, कर्व को डिकोड करेंगे और जानेंगे एक इकोनॉमी क्या-क्या चॉइसेस फेस करती है। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज देयर इज अ प्रोड्यूसर हु वांट्स टू प्रोड्यूस two goods, that is shoes and shirts, by using all his limited resources and technology. Now since he has limited resources, so he has to decide how much he should produce to use his scarce and limited resources efficiently and effectively. Now if we apply this same question to the whole economy, we get the concept of production possibility curve. Now, let's have a look at the definition of production possibility curve. Production possibility curve is a graphical representation of combination of two goods that an economy can produce with the help of given resources and technology. Production possibility curve, जिसे हम शॉर्ट में PPC कहते हैं, is also known as Production Possibility Frontier or Transformation Curve. Now, this curve is drawn on the basis of various assumptions. तो जैसा कि नेम से ही पता चल रहा है that PPC is a curve, तो कर्व को हमें ग्राफिकली प्लॉट करना होता है and graphically we have two axes, x-axis and the y-axis. So we assume that only two goods can be produced in an economy. Now, the second assumption is that resources are limited but can be shifted from the production of one good to the production of another good. इसका क्या मतलब है कि resources limited हैं, हम उन्हें increase तो नहीं कर सकते हैं, पर हम production की need के according उन्हें shift कर सकते हैं. For example, अगर हम shoes and shirt की production के बारे में बात करें, तो जो लेबर शर्ट बना रहे हैं उनमें से कुछ लेबर्स को हम शूज बनाने के लिए शिफ्ट भी कर सकते हैं एंड वाइस वर्सा. टेक्नोलॉजी इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट. टेक्नोलॉजी फिक्स्ड रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा. रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड. सभी रिसोर्सेज पूरी तरह से और अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं. कोई भी रिसोर्स अंडर यूटिलाइज या अनएम्प्लॉयड नहीं है. देन रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल द गुड्स. इसका क्या मतलब है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सभी गुड्स बनाने के लिए इक्वली एफिशिएंट नहीं है. यानी कि अगर हम शूज एंड शर्ट की प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो कुछ लेबर्स को शर्ट बहुत अच्छे से बनानी आती है और कुछ लेबर्स को शूज बहुत अच्छे से बनाने आते हैं. तो अगर हम ऐसी कंडीशन में जो लेबर्स शर्ट अच्छे से बना रहे हैं उनमें से कुछ लेबर्स को अगर शूज बनाने के लिए शिफ्ट कर देंगे तो प्रोडक्टिविटी फॉल करेगी. व्हाई? बिकॉज दे विल टेक मोर टाइम टू प्रोड्यूस शूज देन दैट ऑफ द शर्ट्स. सो cost increases or productivity falls when resources are transferred from production of one good to the production of another. अभी इसी कॉन्सेप्ट को हम और डिटेल में समझेंगे through a concept called marginal opportunity cost. Now, let us look at the PPC with the help of a table or a schedule. All these points are showing the various combination of two goods that can be produced in an economy by using all the resources effectively and efficiently. For example, production combination A represents 28 units of shirts and 0 pair of shoes, and production combination B represents 27 units of shirts and 1 pair of shoes and so on.
And if we plot all these combinations of two goods graphically, we get production possibility curve. Now let's have a look at the graph. Here pair of shoes are shown on the x-axis and shirts are shown on the y-axis. Each and every combination of two goods on the PPC represents full and efficient utilization of all the available resources and technology in an economy. तो जैसा कि अभी हमने बात की कि सभी resources दोनों goods को बनाने के लिए equally efficient नहीं है. So when we transform the resources from the production of one good to another, productivity falls or cost increases. This concept is known as marginal opportunity cost or MOC. अब एक इकोनॉमी में लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और इन लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से अगर हमें किसी एक गुड की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है तो हमें दूसरे गुड की प्रोडक्शन को डिक्रीज करना होगा. सो marginal opportunity cost is the rate at which production of one good needs to be sacrificed for the production of another good. It is also called marginal rate of transformation as resources are used to transform one good to another good. यानी कि अगर हमें गुड X की एक एक्स्ट्रा एडिशनल कमोडिटी प्रोड्यूस करनी है तो हमें गुड Y की कुछ कमोडिटी सैक्रिफाइस करनी होंगी. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द फॉर्मूला ऑफ MOC. द फॉर्मूला ऑफ MOC इज change in Y by change in X or loss of Y upon gain of X, because here we are gaining one additional unit of good X and sacrificing some units of good Y. Now let's calculate the MOC. If we look at this table, MOC is change in Y by change in X. This is the formula that we have just discussed. So here shirts are on the y-axis and shoes are on the x-axis. So shoes are x and shirts are y. Since I don't know the value above it, so in the first place I will simply put a dash. Now change in y. Change in y. The difference of these two numbers is 1 and change in x. The difference of these two numbers is again 1. So this is 1 is to 1. Now change in y. The difference of these two numbers, 27 minus 25 is 2 and change in x is 1. So this is 2 is to 1. Similarly, change in y, now it is 3. Change in x is again 1. So this will be 3 is to 1. Again, change in y, 22 minus 18 is 4 upon change in x, which is again 1. So this is 4 is to 1. Similarly, we can calculate 5 upon 1 or 5 is to 1, and similarly we can calculate 6 upon 1 or 6 is to 1 and 7 upon 1 or 7 is to 1. So here from this table we can see that MOC is constantly increasing. This is constantly increasing. Why MOC increases? Because of the assumptions that all the resources are not equally efficient in the production of both the commodities. And due to this increasing MOC, PPC is always concave to the origin. As you can see this graph, the shape of the PPC is concave to the origin. This concave shape is basically because of the increasing MOC. Now, there is a task for you. You have to quote your own examples to explain the concept of increasing marginal opportunity cost. And in the second question, you have to calculate the marginal opportunity cost. तो आज की वीडियो में हमने जाना PPC की डेफिनेशन, assumptions, ग्राफ और MOC. PPC से रिलेटेड
और कॉन्सेप्ट्स को हम अपनी आने वाली वीडियोस में जानेंगे. So that's all for today. See you again in the next session. Till then, keep learning and take care.